Assalamu alaikum, dear students. I hope you are in a good and a happy mood. Today we are going to discuss how is oxygen and carbon dioxide transported in human beings. Dear students, यानी आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इंसानों के अंदर। यानी जैसे हम फॉर्मल लेसन्स में हम ये पढ़ चुके हैं, वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन्स and carbon dioxide, or in other words we can say that how is oxygen enter in our body and reaches in all part of our body, and when carbon dioxide produced within our body, how it is released from our body. तो आज का हमारा लेसन्स इसी पर है कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट्स होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल and the transports of carbon dioxide from the cells to the lungs is called transport of gases. Transports of oxygen lungs से सेल तक और transports of carbon dioxide सेल से lungs तक is called transport of gases. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स कैसे होता है? द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल इज कॉल्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स इज कॉल्ड oxygen transport. The concentrations of oxygen in lungs alveoli is higher than that in the deoxygenated blood in capillaries. This difference causes oxygen to diffuse from the deoxygenated blood in capillaries. This difference causes oxygen to diffuse from the alveoli into the lungs capillaries. In the blood capillaries, the oxygen is transported by the hemoglobins present in the red blood corpuscles in RBCs of blood. Here hemoglobins, Hb means hemoglobins, combines with oxygens to form oxyhemoglobin. SbO2 means oxyhemoglobins. Each hemoglobin's molecules combines with 4 molecules of oxygen. The oxygen-rich bloods leaving the lungs enter into the heart and then pumped to various organs of the body by simple diffusion. As blood coming from the lungs via heart has high concentrations of oxygen than the body cell,
so oxygen diffuse from the blood's capillaries into the cells of the body. The cells present in tissues of various organs consumes oxygen continuously for various metabolic activities and release carbon dioxide. Carbon dioxide transports. The transports of carbon dioxide from the tissue of the lungs through the blood is called carbon dioxide transport. The transport of carbon dioxide from the tissue to the lungs through the blood is called carbon dioxide transport. In oxygen, in tissue, oxygen is used up in various metabolic activities and carbon dioxide produced continuously. Hence, in tissue, the concentration of oxygen is decreased, whereas carbon dioxide concentration increases. Therefore, carbon dioxide diffuses from the body cells to capillaries. In the capillaries, the carbon dioxide is transported both by plasma and RBC, red blood corpuscles, of the blood. About 67% of carbon dioxide is carried in three forms, namely carbonic acids 5%, carbon amino compounds 10%, bicarbonates 85%. So dear students, in this way oxygen and carbon dioxide transported in humans beings. I hope you will try it. And most important question, तो आपको ये क्वेश्चन जो है अपनी फेसबुक पर उतारना है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमंस बीइंग। और एक एक नंबर का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, यानी व्हाट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या व्हाट इज ए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।